Hey guys, welcome back to my channel. So आज मैं आई हूँ लंदन में to do my sister's duty to meet my brother. So I took a metro from Hayes and Harlington to Tottenham Court and I of course met him there. That is how usually we meet. So today the weather was almost like 3-4 degrees and we decided to go to British Museum which was like an indoor space. हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं लंदन. वेलकम टू माय ब्लॉग अगेन. एंड तो आप जैसा आप देख सकते हैं, ये जस्ट रोलिंग ऑन द लंदन स्ट्रीट. सो या, लेट्स सी हाउ इट गोस. तो हम आ गए हैं लंदन में. ओह, वीडियो तो अभी शुरू हुई है. अबे तो हम आ गए हैं ब्रिटिश म्यूजियम. तो हम ज़्यादा तेज नहीं चला सकते लाइन. तो हम ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते क्योंकि कैमरा लाउड शायद नहीं है, पर अगर होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो हम चुपचाप बाहर आ जाएंगे बिना वीडियो बनाए. तो बने रहे हमारे साथ. चलो गाइस. तो कहते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम सबसे पुराना म्यूज़ियम है. मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, पेरिस के व्लॉग में, जिसमें कि लूवरे सबसे बड़ा म्यूज़ियम था, पर लूवरे से 20 साल पहले ब्रिटिश म्यूज़ियम बनाया गया था, तो इसीलिए ये म्यूज़ियम सबसे पुराना माना जाता है. तो इस म्यूज़ियम में कम से कम 8 मिलियन आर्टिफैक्ट्स हैं प्रेजेंटली. और एक वक्त ऐसा हुआ था कि इन सब चीज़ों को रखने के लिए अलग से साइट बनाए जाने के लिए कहा गया था, बिकॉज़ इस म्यूज़ियम में इतनी जगह ही नहीं थी. और ये सारे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जगह जगह अलग अलग देशों से आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारे यहीं के हैं. सो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं हर कॉन्टिनेंट के, हर देश के. कहीं पर इंडिया है तो कहीं पर चाइना का सेक्शन है, अफ्रीका से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, इजिप्ट से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं. मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड देर आर सेवरल आर्टिफैक्ट्स जो आपको इस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे. तो ये म्यूज़ियम बहुत ही फेमस है. काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ में आज भी इस म्यूज़ियम का नाम आता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है जितने सारे आर्टिफैक्ट्स कई देशों से आए गए हैं, वो सब देश अपने आर्टिफैक्ट्स वापस मांग रहे हैं, पर ये देना नहीं चाहते. ये लोन पर भी अपने आर्टिफैक्ट्स नहीं देते हैं. और उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट रिलीज़ किए हैं जिसमें ये किसी भी हालत में वो सारे आर्टिफैक्ट्स उन देशों को वापस नहीं देंगे. कहा जाता है कई साल पहले यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट्स में एक स्नेल को रखा गया था, जिसको माना गया था कि वो मरा हुआ स्नेल है, बट एक्चुअली वो लिविंग स्नेल था. और इट केम टू लाइफ एंड देन इट वाज मूव टू सुटेबल प्लेस टू लिव, एंड देन इट डाइड आफ्टर 6 years. सबसे इंटरेस्टिंग जगह मुझे ये सेक्शन एक लगा जहाँ पर काफ़ी सारे मैकेनिकल क्लॉक थी. आई मीन, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मास्टरपीस. पुराने टाइम पे क्लॉक कैसे मैकेनिकली वर्क करती थी. देयर वर सो मेनी पेंडुलम वॉचेस एंड क्लॉक्स एंड दे वर इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल. तो जब मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी इन क्लॉक के नीचे, आई लिटरली फाउंड आउट दैट मोस्ट ऑफ द पेंडुलम एंड सम ऑफ द क्लॉक विच इज़ लुकिंग गोल्डन एंड सिल्वर, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कोई भी वॉच सही टाइम नहीं दिखा रही थी. एंड आई मीन बनता भी है, बिकॉज ये सैकड़ों साल पुरानी वॉचेस हैं. सो दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पेंडुलम वॉचेस. दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ गोल्ड एंड द डिज़ाइन, द शेप एंड एवरीथिंग वॉज सो फैंसी. माई गुडनेस, आई मीन, it was insanely unique and vintage. Oh yeah, by the way, I forgot to tell you the entry is completely free for all the foreigners or the visitors or the resident, because we literally did not pay. Sometimes the online website tells you to book your slot or appointment or the time that you want to visit, but it really doesn't matter unless it is very crowded, because they really don't check the timing that you book online, so you can actually walk in at any time of the day. So yeah, I mean, we were actually looking forward to go to the Indian section of the museum where we could see all the Indian artifacts. But we came across this beautiful thing, which was a stone coffin, and I was awestruck by this. I mean, like, how could people think of making a stone coffin? It was so heavy, I could actually feel it. And there were a lot of things from Egypt. Section of this museum is also said to have the mummies from a very old time as well. This was the biggest gate or the door, you can say, that I found here in this museum, and I was awestruck by this because I was wondering how such things can exist in old times.
So we were looking forward to get into the Indian section, which we actually entered, and literally I have to tell you that I lost it at one point. I literally stopped recording everything because I was so lost in this Indian section of artifacts, and we just came out of that museum because I couldn't take it myself. So, of course, a few hours is not enough for this museum, and then you need to have a proper day to explore this completely. And yeah, we decided to have a coffee and chit chat for a while because it was time to say goodbye almost. And yeah, I mean, we wanted to just have a breather and we decided to just chill at one point. So we explored this biggest museum in England, UK, the British Museum, and it was amazing because it was unexpectedly very big in size. We couldn't cover it in a few hours, and we were so tired. But a good place to be here in England. So yeah, this was about it. So if you have liked my vlog, do comment, like, and share, subscribe, and we will see you next time in the next vlog. Keep connected. Time to say goodbye.